nisbatan ज़्यादा common है. They're more common in the West. Now, inflammatory bowel diseases are chronic conditions or chronic inflammatory conditions of the bowel. And the result because of inappropriate mucosal immune activation. Ulcerative colitis is limited to the colon and rectum and extends only to the mucosa and submucosa. It can involve larger parts of the bowel also, but generally it is from the anus or from the rectum proximally. Right? So rectum की involvement almost compulsory है. Rectal sparing नहीं होती है ulcerative colitis में. While Crohn's disease, on the other hand, has also been referred to as regional enteritis. It may involve any area of the gastrointestinal tract and is typically transmural. Transmural का मतलब involving all the layers of the bowel wall, यानी कि mucosa, submucosa, musculus layer, and serosa या adventitia, depending on where in the gastrointestinal tract you are. And the most common site involved with Crohn's disease is the terminal ileum. But Crohn's disease can involve any area of the gastrointestinal tract, right from the mouth to the anus. कोई भी areas में spare नहीं हो सकता. मतलब it can involve any areas. Ulcerative colitis and Crohn's disease both are more common in patients in their teens and early 20s. But then again, this is no exception. We've seen patients coming with Crohn's disease in their late 60s also. Ulcerative colitis is slightly much more common in females as compared to males. IBDs are amongst the more common in the white population or in the Caucasian population, so it's more common in the West. The geographic distribution is highly variable, with the areas having more white population being more common. But that being said, it is now becoming common in our part of the world also. Like if I talk about my experience during our training, we hardly saw 1 or 2 cases of ulcerative colitis, 1 or 2 cases of Crohn's disease in a year. Now we see them much more commonly. Now we see them in like almost a month. We do see a case of ulcerative colitis much more common. Crohn's is still rare, but साल में 4-5-6 cases हो जाते हैं Crohn's disease के भी. Well established process. And that is just one center experience. Pathogenesis. Investigators believe that IBD result from effects of alterations in host interactions with intestinal microbiota, intestinal epithelial dysfunction, aberrant mucosal responses, and altered composition of the gut biome. So it's a complex multi-organ disease, multifactorial disease. इसमें host के responses भी और environmental factors भी part play करते हैं. Now, the genetics or the genetic component of IBD is the evidence is based on these findings. First of all, risk of disease is increased when there is an affected family member. This is more so for Crohn's than as compared to ulcerative colitis. Crohn's की जो familial association या family history की importance है वो ज़्यादा as compared to ulcerative colitis. And it has been observed that monozygotic twins affected by Crohn's disease tend to present with disease in similar regions of the gastrointestinal tract. And they present with Crohn's disease with a very the gap is very small. यानी कि एक को होगा तो कुछ अर्से बाद दूसरे को भी हो जाएगा. The concordance of monozygotic twins for ulcerative colitis is about 15%. There is a familial disposition also in ulcerative colitis, but it is more pronounced or more apparent in Crohn's disease. Several IBD-associated genes overlap with genes involved in response to mycobacteria, hence giving us the impression or giving the impression that it's an abnormal or exaggerated response to the microbiota of the gut that predispose you to develop ulcerative colitis or Crohn's disease. And of these genes, not to ATG16L1 and IRGM
Hello? And IRGM are involved in recognition and response to intercellular pathogens. सही है? तो ये जो NOD2 है, ATG16L1 है और IRGM genes हैं. They are involved in how your cells respond to the various bacterial pathogens within the microbiota. और इन्हीं की altered response की वजह से it has been observed that these patients tend to develop ulcerative colitis and Crohn's. Now, the mucosal response involved in patients with IBD is altered from that seen in normal individuals. Uh, the mucosal responses of the type 1 helper cells and the type and the Th17 type T cells uh, is altered from the normal population. The Th1 type helper T cells are activated in Crohn's disease, and there is an exaggerated response in patients suffering from Crohn's disease as compared to the normal population. And the Th17 type T cells, their altered response because of polymorphisms in interleukin 23 gene or interleukin 23 receptor is altered, and if there's this alteration, then these patients are at decreased risk for developing Crohn's disease and ulcerative colitis. And then there's some role of interleukin 10 also, which and tumor growth factor beta also, which appear to play a role in pathogenesis of inflammatory bowel disease. And now it's a complex pathway. ऐसा नहीं कि सीधा सीधा है. कुछ polymorphism जो है वो आपको या कुछ genetic variation जो है predispose करती हैं to develop Crohn's disease और ulcerative colitis. कुछ polymorphism जो है वो protect करती हैं against Crohn's disease and ulcerative colitis. And then microbiota. The makeup of your microbiota can alter or can predispose you to develop Crohn's disease and ulcerative colitis. और इसका जो evidence हमें मिलता है, or the evidence that we get is that if you give probiotics to individuals suffering from Crohn's disease or ulcerative colitis, some tend to improve. Likewise, animal studies may and in certain human studies also, fecal transplant from normal individuals, यानी कि आपने फीकल माइक्रोबायोटा लिए ऐसे पेशेंट के जिसको कवरेज नहीं थी और उस पॉपुलेशन को ट्रांसप्लांट किया इन patients suffering from ulcerative colitis and Crohn's disease, those patients benefited from that transplant of the microbiota. Now, the abundance of microbiota in the GI lumen is overwhelming, amounting to as much as 10 to the power of 12. Yani ke they outnumber us like anything. To take all the human cells, put them in one side, they outnumber us by 10 times more. They're 10 times more in number as compared to what our own resident cells. So, organelles per milliliter in the colon. Sorry, I'll fix this. And the bacteria account for about 50% of the fecal mass. In total, these organisms greatly outnumber human cells in our body. A sober reminder that at cellular level, we may be only about 10% human. Presence of antibodies against bacterial protein flagellin are more common in Crohn's disease, and these patients tend to develop strictures and perforation and a greater degree of small bowel involvement. In contrast, these patients of ulcerative colitis generally do not harbor this anti-flagellin antibody. Transepithelial flux of luminal bacterial components activate innate and adaptive immune response. Then again, सब में नहीं होता. It is only patients who are at risk for development of these Crohn's disease and ulcerative colitis. जब ये bacterial products expose होते हैं लैमिना प्रोपिया में या epithelial surfaces के epithelial cells को, तो altered response आता है. Just like we saw in celiac disease, वहाँ पे gluten against था, यहाँ पे bacterial products against होता है. And because you're genetically predisposed,
to respond in an abnormal way against these bacterial components. Um, TH type 1 cells or TH type 17 or responses or TGF beta responses are all produced in an exaggerated fashion, and then you get symptoms of ulcerative colitis and onset. Now, coming specifically at a roll number 65, raise their hand. Any question? 65. No, okay. Regarding Crohn's disease, disease usually begins with intermittent attacks of mild diarrhea, fever, and abdominal pain. May present acutely with lower coordinate pain, fever, and bloody diarrhea. ये important है because there दोनों में ulcerative colitis में Crohn's disease में ulceration, surface ulceration. So because of fever, you might mistake these patients for having infectious colitis also. But generally, they don't respond well to antibiotics, and the symptoms or the duration of the symptoms are prolonged. And obviously, then you need to do a biopsy to confirm whether the patient is infectious, suffering from infectious colitis or inflammatory bowel disease. Not only biopsies, but stool DR and stool culture also. Asymptomatic periods last for weeks to months. Disease reactivation with physical or emotional stress and specific items such as smoking may also be seen in cases of Crohn's disease. Important है we'll see later on. Smoking helps relieve patients symptoms of ulcerative colitis in patients with UC. Crohn's disease may smoking really exacerbates or exaggerates the immune responses and your symptoms. And obviously, because of chronic diarrhea, you see iron deficiency anemia. Not only iron deficiency anemia, but in Crohn's disease, you frequently also see vitamin B12 deficiency because it affects the terminal ileum. And if you remember your physiology, vitamin B12 की जो main absorption है वो terminal ileum में हो रही होती है. Serum protein loss and hypoalbuminemia, generalized nutrient absorption and malabsorption of vitamin B12 and bile salts. So they will also present with diseases or signs of symptoms of vitamin K deficiency and bleeding disorders also in chronic cases. Then another complication is fibrosing strictures and fistula. ये दोनों प्रॉब्लम इसलिए हो रही होती है कि देयर इज ट्रांसम्यूरल इन्वॉल्वमेंट और ऑब्वियसली जब इन्फ्लेमेशन सारी लेयर्स को इन्वॉल्व करेगी ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट chronic inflammation होती है. So if you remember your general pathology, whenever there is chronic inflammation, there is healing by fibrosis. और जब एक luminal structure फाइब्रोस होगा तो उसका ल्यूमन और पतला हो जाएगा, तो इसलिए स्ट्रिक्चर्स बन जाते हैं. And obviously, when there is inflammation across the thickness of the muscle layer into the serosa, then you can get fistulas also. Enteric fistulas, यानी कि one part of the gastrointestinal tract abnormally communicating with other part of the gastrointestinal tract is commonly seen. Not only gastrointestinal tract but other organs also. Skin के साथ भी मिल सकते हैं. Intestinal manifestation of Crohn's disease include uveitis, obviously because this is an exaggerated response. So it is a disorder of the immune system. It can also involve other organs also. Uveitis, migrating polyarthritis, sacroiliitis, and ankylosing spondylitis, erythema nodosum, clubbing of fingertips, pericholingitis, and primary sclerosing cholangitis. And these patients are also at increases for developing colonic adenocarcinoma. Now, coming to ulcerative colitis. Now, ulcerative colitis is, in contrast to Crohn's disease, which was more of a disease of the all of the gastrointestinal tract.
with predominantly involvement of terminalium. Ulcerative colitis is predominantly a disease of the rectum, and in severe cases, whether it ascends proximally. So rectal involvement is almost always a rule. Common extratestinal manifestations of ulcerative colitis include migrating polyarthritis, sacroiliitis, ankylosing spondylitis, uveitis, and skin lesions. And up to 7.5% of patients with ulcerative colitis may also have primary sclerosing cholangitis. Now, ulcerative colitis is a relapsing disorder characterized by attacks of bloody diarrhea with stingy mucoid material, lower abdominal pain, and cramps that are temporarily relieved by defecation. Symptoms persist for days and weeks, sometimes even months. So this is a nuisance because ulcerative colitis में generally जो bleeding है वो ज़्यादा होती है. Most have clinically mild disease, although almost all experience at least one relapse during a 10-year period. In ulcerative colitis, sometimes the bleeding is so severe that there's no other option except removing that part, and ये आपको colectomy करनी ही पड़ जाती है क्योंकि bleeding जो है वो control नहीं हो रही होती and the patient bleeds profusely. Up to 30% require colectomy within the first 3 years of presentation. Colectomy is effective because, as I told you, the disease involves the rectum and then it extends proximally. So if you take the disease portion out, so ये elsewhere gastrointestinal tract को involve नहीं करता, so you get rid of the disease process. So patients do benefit from surgery. Triggers are known, but infectious enteritis and psychological stresses may precede disease in some cases. This is one of the few diseases where if somebody is already smoking, you don't advise them to start smoking, but अगर patient already smoker हो, so in some cases you might advise the patient not to quit smoking or to just completely, because these patients sometimes benefit from keeping on smoking. But then again, those who have never smoked will not benefit. Only smokers who have ulcerative colitis may benefit. Some of them may benefit if they keep on smoking. Now, what happens is because there's a lot of overlap in the clinical features, in the microscopic findings, in the clinical presentation of ulcerative colitis, sometimes you're not able to exactly characterize whether the patient has ulcerative colitis or Crohn's. So in those cases, we label the patient as having indeterminate colitis. And most cases of indeterminate colitis, with time, if you follow them, you will be able to fit them in some group. But because clinically at time of presentation, you might not be able to tell always whether the patient has ulcerative colitis or Crohn's disease. So sometimes it's difficult to diagnose, and those patients are termed as indeterminate colitis. And approximately 10% of the patients fall into this category. Serological studies can be useful in these cases because perinuclear anti-neutrophil and cytoplasmic antibodies are found in 75% of individuals with UC, but only 11% of patients of Crohn's disease harbor these antibodies. Now, coming to the stuff that is frequently asked in exams is the differences between ulcerative colitis and Crohn's disease. तो देखो बेटा, ये चीज याद कर लो. एक बार ये चीज समझ में आ गई तो अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज का फर्क समझ में आ जाएगा. जो उसकी प्रेजेंटेशंस हैं, जो फीचर्स हैं, वो डिफरेंट से. क्रॉन्स डिजीज में इन्फ्लेमेशन होती है ट्रांसम्यूरल, यानी कि म्यूकोजा इन्वॉल्व होता है, सब म्यूकोजा इन्वॉल्व होता है, मस्कुलर इन्वॉल्व होती है और सिरोज इन्वॉल्व होती है. तो जब भी हीलिंग होगी तो ट्रांसम्यूरल होगी, ट्रांसम्यूरल होगी तो फाइब्रोसिस होगी, ट्रांसम्यूरल होगी, स्ट्रक्चर बनेंगे, परफोरेशन भी हो सकती है, फिस्टुलास भी हो सकते हैं. अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्योंकि जो इन्फ्लेमेशन है इट इज लिमिटेड टू द एपिथेलियम एंड सब म्यूकोजा, तो जनरली परफोरेशन, फिस्टुला फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन नहीं होती. इसमें
प्राइमरी कंप्लेंट जो होती है वो ब्लीडिंग तैयार होती है या पेरी डायरिया होता है। इसमें जो है तभी इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो ट्यूबरक्लोसिस के साथ मिलती होती है, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस में भी जनरली इन्फ्लेमेशन इज ट्रांसफर। क्रॉन्स डिजीज किसके फीचर्स होते हैं? मल्टीपल एरियाज ऑफ द बाउल, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन इन्वॉल्व हो सकते हैं। जनरली स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, बट इट कैन इन्वॉल्व एनी एरिया। इट कैन इन्वॉल्व द स्टमक, इट कैन इन्वॉल्व द माउथ, इट कैन इन्वॉल्व द एसोफेगस, इट कैन इन्वॉल्व द रेक्टम एंड एनस आल्सो। अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है वो डिस्टली मतलब वो रेक्टम से स्टार्ट होता है एंड देन इट एक्सटेंड फ्रॉम। हाँ, इस स्टार्ट को अच्छी तरह कर लो, क्योंकि ये एमसीक्यू के लिए एक कान है, इसमें से एमसीक्यू उमड़ उमड़ के निकल रहे हैं। सही है। तो एक चीज जो तुम लोगों को इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट ये है कि माइक्रोस्कोपिक फीचर्स, माइक्रोस्कोपिक फीचर्स एंड देन क्लिनिकल फीचर्स, ये बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। सही। तो माइक्रोस्कोपिकली या ग्रॉसली क्रॉस डिजीज will involve the ileum plus minus colon. UC will involve the colon only. Distribution Crohn's disease की पैथी होती है, जैसे कि lesions multiple area of the gastrointestinal tract involve होंगे, preferentially terminal ileum involve होता है। Ulcerative colitis diffuse होता है और it starts from distally from the rectum and then it extends from the leaf. Picture formation is fairly common in Crohn's because of transfusion inflammation. Ulcerative colitis rate is a rare complication. Wall appearance thickened होती है because of fibrosis. Ulcerative colitis में it is generally thinned out. Likewise, transfusion inflammation है Crohn's में, ulcerative colitis में it is usually limited to the mucosa and submucosa. Okay. Now, अब मैं यहाँ पे पूछता जाऊँगा, मुझे आप जवाब बताते जाइए। कैट को हाँ जी। What do you think this is? Ulcerative colitis or जी? Ulcerative colitis, रोल नंबर 83। नहीं बेटा, दिस इज Crohn's disease, क्योंकि अगर तुम गौर से देखो तो देखो ल्यूमन हुआ है नैरो। सही है। ल्यूमन हुआ है नैरो और इसकी जो वॉल है ये थिकेंड दिख रही है। दिस इज बिकॉज ऑफ फाइब्रोसिस एंड स्कारिंग। सही है। तो थिक फाइब्रस वॉल होगी, पूरी वॉल इन्वॉल्व हो रही है, ल्यूमन नैरो हो रहा है स्ट्रक्चर फॉर्मेशन की वजह से। दिस इज Crohn's disease। हाँ, तो देखो ना, यहाँ पूरी थिकनेस, इंटायर थिकनेस हो रही है ना। ल्यूमन नैरो हो गया बिकॉज देखो फाइब्रोसिस थी। अब मैं इसको यूं समझाऊं तुम्हें, एक सेकंड। क्या होता है ये, देखो ये नॉर्मल ल्यूमन है। सही है। ये म्यूकोजा हो गई, ये सब म्यूकोजा हो गई, ये मस्कुलर लेयर हो गई और ये सिरोजा हो गई। सही है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या हुआ, क्रॉस डिजीज में क्या होगा, क्योंकि ये फ्लेम होगी, ये सिकुड़ जाएगी। सही है। और बिकॉज ऑफ दिस वो नैरोइंग, ये देखो फाइब्रोसिस की वजह से ये पूरा एरिया सिकुड़ जाएगा, ल्यूमन नैरो हो जाएगा। सही है। ओके। ओके। सही है। अच्छा, देखो ये जो ये व्हाट डू यू थिंक दिस इज? जी। नहीं, अच्छा देखो ये म्यूकोजा है। दिस इज द म्यूकोजा आई, लेकिन मैं इसको भी देखता हूँ।
प्रेजेंटेशन डाल गई। हाँ देखो बेटा, ये ना देखो ऐसे नहीं पड़ा जैसे जैसे अक्सर कहीं रास्ते में वो पेव कर देते हैं छोटे छोटे स्टोन से, तो दिस इज कॉबल स्टोन अपीयरेंस, जैसे पत्थर पड़े हुए ना। और यू इफ यू कैन अप्रिशिएट, ये जो लंबे लीनियर लॉन्ग अल्सर्स हैं, दीज आर कॉल्ड सर्पेंटाइल अल्सर्स। लीनियर फिशरिंग अल्सर्स, कॉबल स्टोन अपीयरेंस, दिस इज Crohn's disease। सही है, लीनियर फिशरिंग अल्सर्स एंड दिस कॉबल में पत्थर पड़े हुए, देखो वो तो दिस इज कॉल्ड कॉबल अपीयरेंस, कॉबल स्टोन अपीयरेंस, दिस इज Crohn's disease। दिस इज Crohn's disease। सही है, ये परफोरेशन हो रही है, स्किप लीजन है, ये एरिया इन्वॉल्व है, ये एरिया इन्वॉल्व है, ये एरिया इन्वॉल्व है, बीच में नॉर्मल एरिया आ रहा है, दिस इज Crohn's disease। अच्छा देखो, Crohn's disease में क्योंकि सीरोसाइटिस मतलब ट्रांसमिटेड इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, तो व्हाट हैपेंस इज जब सीरोसा इन्वॉल्व इन्फ्लेम होती है, तो एज अ प्रोटेक्शन व्हाट हैपेंस इज द मेसेंट्रिक फेट स्टार्ट्स क्रीपिंग टू कवर दैट एरिया ऑफ इन्फ्लेमेशन, ताकि परफोरेशन ना हो पाए, तो दिस इज कॉल्ड अ क्रीपिंग फैट फिनोमेनन। So this is seen in ulcerative Crohn's disease, सही है, and this is a sign of transmitted inflammation। ये ट्यूबरक्लोसिस में भी मिलती है। तो ये तो इतनी क्लियर नहीं है, बट इफ यू कैन अप्रिशिएट, देयर इज ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन। ये देखो डीप फिशरिंग अल्सर, देखो, कैन यू अप्रिशिएट, दीज आर डीप फिशरिंग अल्सर, गहरे अल्सर्स हैं। अल्टीमेटली यही अल्सर जो हैं इन्फ्लेम होके पूरी वॉल को इन्वॉल्व करते हैं, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन, and sometimes the inflammation can be so severe that it can cause perforation। So this is then it calls as perforation। अगर यही हील कर जाएगा तो पिक्चर बढ़ जाएगा। क्लियर है, दिस इज अ परफोरेशन, कौन सी? अच्छा देखो, इसमें देखो, ये रिलेटिवली नॉर्मल म्यूकोसा है, थोड़ी सी कंजेस्टेड है, और ये जो है ये सारी एक बिल्कुल कंटिन्यूस फैशन में इन्फ्लेम हुई हुई है। ये देखो, एक्सटेंसिव ब्रॉड बेस्ड अल्सर्स हैं, सही है, कंप्लीट एक कंटिन्यूस फैशन में। दिस इज अल्सरेटिव कोलाइटिस, starting from here, from the rectum, and then extending through the transverse colon and almost up to the proximal ascending colon, सही, continuous fashion में, and this is the ascending colon and cecum which are involved। So this is ulcerative colitis, सही है, ulcerative colitis। देखो यहाँ पे broad, if you remember that cobblestone appearance वाली picture, so this is a broad ulcer, इसमें वो cobblestoning इतनी अच्छी नहीं हो रही, सही है। So this is ulcerative colitis। ऑब्वियसली देयर आई टोल्ड यू, ओवरलैप हो सकता है, बहुत बिजली की तस्वीर हो सकती है, तभी आपको बायोप्सी भी करनी पड़ जाती है। नाउ दिस इज Crohn's disease, सही है, लॉन्ग सर्पेंटाइन अल्सर्स, लंबे लंबे लीनियर फिशरिंग अल्सर्स हैं, सही। बेटा इन्फ्लेम पार्ट, नॉन इन्फ्लेम पार्ट ऑब्वियसली ग्रॉसली जो है वो ज़्यादा कंजेस्टेड होगा, एपिथेलियम आपको ओडी भी दिखेगी तो वो एरिया फ्लैटेड दिखेगा, और फिर माइक्रोस्कोपिकली जो है वो कंफर्म करते हैं कि इन्फ्लेमेटरी सेल्स कितने हैं, कहाँ पर हैं, लेमिना प्रोप्रिया के अंदर हैं। मैं भी वो दिखाता हूँ, माइक्रोस्कोपिक इमेजेस पे आता हूँ, सही। बट ग्रॉसली दोज एरिया विल अपीयर फ्लैटेड आउट, सही है, बिकॉज ऑफ द अल्सरेशन। अच्छा, एक एक सेकंड,
जस्ट ओवर ये इमेज दिख रही है? कोई एक रेज हैंड करके बता दे कि दिख रही है। ओके, बस सही सही सही, आई गॉट इट। देखो, दिस इज अ केस ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस। इफ यू कैन अप्रिशिएट द ग्लूकोजा इज थिन्ड आउट, जो भी इन्फ्लेमेशन है वो सब ग्लूकोजा और सब ग्लूकोजा तक इन्वॉल्व कर रही है। जो जो अ, जो मसल लेयर है वो स्पेयर हुई है। सही है। अब इफ वी स्विच टू if we switch to ये देखो, this is हाँ, दिस इज क्रॉन्स डिजीज। एक तो ये देखो, ये स्मॉल बाउल है, सही है, जिसका आर्किटेक्चर दिस इज कॉल्ड आर्किटेक्चरल डिस्टॉर्शन। सही। नॉर्मली जो विलाए हैं वो लंबे लंबे उंगलियों की तरह के होते हैं, इस तरह की पिक्चर दिख रही होती है। सही है। इसमें जो ये विलाए हैं ये छोटे हो गए हैं, इनकी डिस्टॉर्शन हो गई है। एंड इफ यू कैन अप्रिशिएट द इन्फ्लेमेशन इज गोइंग अप टू द सिरोजा। सही। देखो, ये म्यूकोजा है, ये सब म्यूकोजा है, ये मस्कुलर लेयर है, और ये देखो सिरोजा तक ये लिम्फोइड गेट्स मिल रहे हैं हमें। So this is called transparent inflammation. And in Crohn's disease, up to 40% may show बहुत शो कि कभी कभार बहुत मुश्किल हो जाता है ये बताना कि ये ट्यूबरक्लोसिस है कि Crohn's disease है, and you might need to do PCR or culture studies. सही है। So this is you see epithelial gliomas in Crohn's disease. On the other hand, in ulcerative colitis, as I told you, ये सिरोजा या बिल्कुल क्लीन है, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है। You see crypt abscesses in ulcerative colitis. Crypt abscess क्या होता है? This is a crypt or a gland when we see neutrophils coming into the epithelium. सही है? जब मैंने गैस्ट्राइटिस में बताया था, अगर लैमिना प्रोप्रिया के अंदर है तो उससे which is acute inflammation. When we see neutrophils or eosinophils within the crypt epithelium, it is called active inflammation, or in case of large bowel, cryptitis. सही है। तो ये न्यूट्रोफिल जो है वो एपिथेलियम के अंदर घुस जाते हैं, और जब ये ल्यूमन के अंदर आ जाते हैं स्पिल ओवर होके, तो दिस इज कॉल्ड अ क्रिप्ट एब्सेस, यानी कि क्रिप्ट के अंदर एक एब्सेस सा बन गया, तो दिस इज कॉल्ड अ क्रिप्ट एब्सेस। एंड दिस इज सीन, इट इज अ फीचर ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस। यानी कि इफ यू डोंट सी क्रिप्ट एब्सेस, यू शुड थिंक कि am I really dealing with crypt ulcerative colitis or not? सही है। So it is, you see crypt abscesses in ulcerative colitis. You can see crypt abscesses in other diseases also, but if you अगर कहीं MCQ में crypt abscess का नाम लिखा हुआ है, so the first thing that should come to your mind is ulcerative colitis. Granulomas rare होते हैं ulcerative colitis में, it is more a feature of Crohn's disease rather than ulcerative colitis. And there's crypt distortion. यहाँ पे देखो, crypt जो है जनरली वो लंबी लंबी ट्यूबुलर सी होती हैं, जैसे ये है ना, बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। यहाँ पे देखो शेप खराब हो रहा है। दिस फीचर इज कॉल्ड crypt distortion. टेढ़ी मेढ़ी होनी शुरू आती है। One of the most feared long-term complications of ulcerative colitis and colonic Crohn's disease is development of neoplasia, and this uh, is directly proportional to the duration of disease, extent of disease, and nature of inflammatory response.